last class, we have discussed about MB, CP, LS command, cat command, RM command, and today Uh, we continue from next commands. And we have some more commands like the head command, tail command, slash command, more commands. So let this machine will start. Okay, so today's our next command is head command. Head. So what is the use of this head command? So हम इस head command से क्या कर सकते हैं? If I want to read only 10 files of a file from starting, so I can use head. Like suppose I have this anaconda file, mm, anaconda-ks.cfp, and if I do cat space anaconda to read this file, so it will show me complete file, and there is multiple lines under this file. Right? So हम यहाँ देखें तो बहुत सारी lines हैं, और मुझे इसके लिए स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ता है. बट अगर मैं ये mm, चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो है वो ओनली 10 लाइन्स पढ़नी है, सो आई कैन यूज first हेड key 10 कमांड. line. राइट. ओनली स्टार्टिंग 10 लाइन. So I can use head space and the name of file and then enter. So it will show me only 10 lines. Right? These are 10 lines. And if I want to more than 10 line or less than 10 line, means I just want to specify the line numbers, how much lines I Mm, want to see. So what I can do, head space and hyphen and the line number. I want to see suppose 12 lines. So I can give 12 okay. number and then space and then anaconda. Then press enter. So it will show me 12 lines. Right. And same I can give any number like I want to see only 4 lines. So it will show me only 4 lines. These are 4 lines. Yes, sir. Right. So by this head command, I can get the lines what I want. And next command is tell. Tell Okay. means what? Same. If I Last key. write last 10 lines, it will show me Mm, last 10 lines. So tell space anaconda and then enter. So it will show me last 10 lines. So these are 10 lines from the last, right? And if I want to specify any number with this tell, so I can also specify the numbers. Tell space hyphen and suppose I want to see 7 lines and then enter. So it will show me 7 lines, right? And you can also give any number. Like I want to see only 2 lines from the end. So it takes showing 2 lines. Right? Head and tail clear. uh, Okay. And then we have next command, and that is less command. And what this less command will do, less space anaconda means file name and then enter. So it is showing me complete file name. But what is the difference between this less and this get command? So in this less command, I can mm, scroll line by line and search any word. Like I want to scroll, so I can scroll with my arrow keys. यानी कि अगर मैं इस फाइल के अंदर क्या चाहता हूँ, मैं इसे स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली अपना जो अप एंड डाउन एरो होता है कीबोर्ड के अंदर, mm, उससे मैं अप डाउन कर सकता हूँ. बट जब मैं कैट कमांड का यूज करता हूँ, लाइक इफ mm. आई use cat command here, so what cat command will do, cat space anaconda. So cat command में मैं क्या है, मैं इसे स्क्रॉल नहीं कर सकता. मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो मेरी जो कमांड है वो न्यू आ जा रही है, राइट. मेरी यहाँ पर स्क्रॉल नहीं होगा, इसके लिए मुझे क्या माउस का यूज करना पड़ेगा. एंड माउस का Mm, यूज करके फिर मैं क्या करूंगा, इसमें अपना जो स्क्रॉल की है उससे स्क्रॉल करूंगा. बट यहाँ भी लाइन बाय लाइन नहीं है. यहाँ पे जो स्क्रॉल करता हूँ, mm, कई लाइन्स आपकी स्क्रॉल डाउन यानी स्क्रॉल अप हो जाती है.
हम्म, तो वहां पर जो लेस कमांड है बहुत ही यूजफुल है। एंड यहाँ पर जब हम एनाकोंडा फाइल का नेम दे रहे हैं लेस के साथ में, तो यहाँ पे हम अपना सिंपली जो है वर्क कर सकते हैं। लाइक मुझे रीड करना है एंड लाइक मुझे कुछ इंस्पेक्शन करना है, सो मैं यहाँ पर एरो कीज का यूज करके अप डाउन कर सकता हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो सर्च एनी वर्ड्स with less. And how I will search? So I will put slash forward slash, हम्म, and then I want to search any word like password. I want to search this password word and then press enter, so it will show me where is the password. So we have two password words, हम्म, right? And if I want to search any more words, so I can also do like I want to search part, enter. So okay, part is not available. And is there any partition? Yes, so partition is also okay. Partition is available, हम्म, right? And if I will give any other word like server, enter, so it is showing this is server. सर्वर, So with less command, I have two advantages. Means one is I can search any word with under the file, and I can also scroll line by line to the content of the files, right? जी, Okay, and next is more command. So from exit this less command, because if I will enter, so it will go to end, but I will not be हम्म, able to exit from this less. So I have to do control Z, right? कंट्रोल जेड, Control Z. So after control Z, I will be exit from this less command. And then next command is more space, and then file name. So my file is anaconda file. So now what is the difference between less and more? So with less command, I will scroll line by line, but with more command, I will scroll page by page. Means suppose if I will enter, it is the head of the file, right? This is first page. हम्म, And if I ओके, will to enter, no. If I will do down arrow, right. एरो की, हाँ, Down arrow key. So it will हम्म, move me to next page. ओके, राइट, यानी अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मोर कमांड का यूज करता हूँ तो मैं इसमें पेज बाय हम्म, पेज करूंगा। अब इसमें सिर्फ दो ही पेज है। जैसे अगर मैं मोर की, तो अभी हम क्या 33% पे, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो नाउ आई एम इन 99%, राइट, एंड हम्म, देन 100%। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेज बाय पेज जो है वो स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक, बताओ इतने में कोई डाउट हो तो। सर इसमें भी हम लोग सर्च कर सकते हैं मोर में, मोर में देखो, मोर में हाँ, जब यहाँ पे करते हो मोर ना, तो यहाँ पे स्लैश आ गया, एंड स्लैश के बाद हम्म, अगर आई जस्ट राइट आर लेआउट्स, तो लेआउट्स मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो अभी हमें सर्च में नहीं ले जा रहा है। जैसे अगर हम्म, मैं यहाँ क्या लिखूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पासवर्ड, राइट, तो पासवर्ड में नहीं हो रहा। मीन्स यहाँ पे आप हम्म, क्या सर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऑप्शन तो दिखाएगा कि स्लैश आप लगा रहे हो लग जा रहा है, बट वो वर्क नहीं करेगा। हम्म, वर्क किसके साथ कर रहा है, सिर्फ लेस के साथ। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, पेज को पूरा स्क्रॉल कर रहा है, जबकि वो क्या लाइन बाय लाइन चेक करता था लेस। हाँ, सो उस लाइन बाय लाइन में वो हमें रिजल्ट देता था, ठीक है यहाँ पे आपको ये वर्ड जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं। ओके,